Am I audible? Am I audible to everyone? Yes, you are audible. Okay, thank you. Today's topic is, what is the solution of suicide so common among students? Key points for discussion are: suicide is the third leading cause of death for 15 to 24-year-olds. Depression, loneliness. Don't find alternative to their problems. They don't find their alternative to their problems. Highly intelligent child when doesn't fit in the class and course curriculum. And the fifth point is law for students' suicide. We will just discuss on these points one by one. And this was the topic in the earlier discussion also, when we discussed met on last week. In last session, we have the discussion on the problem point. In this discussion, we will discuss on the solution side. So we have today many experts. New members are also here. Vijay Lakshmi Didi is here, and more new members will join. And this Razu, California, I don't know whom this person is, and more are likely to join. And some are from the South India, so I will request maximum person, those who know English, so please be eloquent in English, and if not, no problem, we can understand Hindi also, and we are from North India, so yeah, we are more comfortable in Hindi, but yeah, we can manage all both the languages. Thank you so much. Now I will request Haranand Dada to start with his eloquent voice. Thank you, Dada. Thank you, Didi. I assure you that I'll respect the time limit. Now, no problem. We straight away move to solutions, as has been indicated for the topic for today. Now, in my view, based on discourses of Shri Shanmurthy ji, neo-humanistic education is the answer, is the panacea, is the remedy. Now, let's try to understand, because we talk of humanistic education. I was going through the finer aspects of neo-humanistic education. The philosophical part, there are two parts, facts and philosophy. So what is the thinking behind neo-humanistic education? What is the message that should go to the society? Now, there are 5 different aspects I just want to highlight in a few minutes. First is integrated development. Now, let's understand, integration means all aspects to synchronize with each other and to work in synthesis. It shouldn't be that, as they say in English, the left hand does not know what the right hand is doing. Like our body parts, both the eyes move, synchronize with each other. Both the hands generally, unless we give the instruction like that. And everything is synchronized. All our movements are rhythmic. So integrated development is one key aspect, which means that, yes, let's come to second point, all-round development. Sarvangin Vikas, integrated development is Samekit Vikas. So Sarvangin Vikas, when we talk about all-round development, we mean physical, physico-psychic, psychophysical, there are many skills which are physico-psychic and psychophysical. Like driving, a basic thing. It is physico-psychic. Both mind and body have to work in coordination. If they don't work, then we'll end up in trouble. So all-round development, Prout also lays down the basic fundamental of all-round development when it has been talked in one of the principles of Prout, as we all know. Maximum utilization of physical, psychic, and spiritual resources. So when we talk of education, we must cover all these 3 aspects, and all these 3 aspects must be in symphony. It's like an orchestra being played on the stage. If there are 10 instruments, all have to, work in symphony. Otherwise, somebody will play Rag Darbari, some will go for Rag Bhairavi, other will go for Rag Pahadi, Rag Malhar and all that. That doesn't work. And then what will you hear on the stage? Complete chaos, nothing will understand. So integration of all the parts is very important. Like we do in brain integrates simultaneously about a dozen functions, we see things, we hear things, we analyze things
we move our hands, we move our eyelids, we also move our neck and face, so brain is coordinating at least a dozen movements right now for everybody. Now, next is focus on role of parents and teachers. This is very important as far as suicides are concerned, because, a student, as in the earlier discussion, one of the panelists, pointed out that, the number of students is so high that teachers cannot give time. It's a very practical thing in India. Normally idle class should not be more than 25, 30, but in government schools, it's 50, 60. Now, what one teacher cannot manage, class teacher or whatever. So basically, when it comes down to parents, so one child or two parents, two persons can manage, both father and mother, including the brothers and sisters. So focus on role of parents is very important as far as suicide is concerned, because of two factors. The children share and want to share their emotions, feelings, ambitions with their parents, and more with their mothers, because generally every boy or girl is more in tune with the with mother because of love, affection, care, and so many things. Father has a different role to play, as society has done. Next is, as it has been said, cultural integration. We must integrate the child with the Indian culture, and this pseudo culture, up Sanskriti jise kaha gaya hai, this pseudo culture which is spoiling the whole world, which is basically a dark shadow of Western culture. We cannot say that the whole Western culture is pseudo, because Western culture has many good things also. So, the dark shadow of Western culture, which is pseudo culture, has to be, kept aside, and as far as this country is concerned, the integration has to be done in all fields: music, art, literature, dance. And it has been said in a discourse on how to unite society that every person must know the historical personality, great men and all that. So this is the third aspect. First is integrated development. Second is all-round development. Third is focus on role of parents and teachers. Fourth is integration with the culture. Integration with the culture in terms of knowledge and assimilation of musical traditions, traditions of art, traditions of literature and dance. So it includes, let us clarify, it includes Prabhat Sangeet and dances also. Like Kirtan is also a form of dance, we know, and apart from Koshki and Tandav, that we know. Most important aspect of this, I should say, in the present scenario is integration with ecology, with the whole natural environment. The boy or the girl, the student, must see nature herself or himself, get up in the morning, chirping of birds, rising of sun, setting of sun, and how nature behaves. And I have been repeatedly telling in even my official sessions during my service to my officers that, look, if we look at the discipline of nature, we learn everything that we have to learn in life. For example, the discipline of birds, getting up early in the morning, leaving their nests and children, small children, and leaving for food, and religiously coming back in the evening, back to their nest as far when the sunset starts taking place. So nature has given a lot of discipline in terms of food also. A cow cannot eat meat, and a dog cannot eat grass. So that is the discipline that nature has given to its subhuman creatures. Now, humanity has a distinct advantage of having discrimination. The power to discriminate, जिसे विवेक शक्ति कहते हैं. तो विवेक का प्रयोग करके मनुष्य आज किस डायरेक्शन में जा रहा है, that is beautifully said. मानुष हाराए होश कोताए जाचो तुमी. It is one of the Prabhat Sangeet songs. Now, these 5 points, let me again repeat: integrated development, all-round development, focus on role of parents and teachers, on cultural integration, because too much focus on studies, curriculum, results
maximum marks and topping in the class and batch and everything. It results in a very clear, mismatch between the other interests of the children. Like every boy, girl, teenager, child, school going, college going, has some interest in aspects other than studies. What we call co-curricular activities, what we call extra academic activities. Some are interested in debates, music, painting, art, drama, movies. Good movies also have a strong message, as has been told in the discourse on education, that bad movies, of course, leave a bad impact, but good movies, like a good movie on Shivaji, on Mirabai, on Alexander, they inspire people, on Napoleon, they inspire people. So ultimately, integrated development means the child will focus on self-discipline and self-control. So the role of yoga has been highlighted in neo-humanistic education. It will result in self-control and self-discipline. So if self-control is there, the emotional outburst which results in suicide, emotional wildfire जिसे कहते हैं, जंगल की आग की तरह भावनाएं सुलग जाती हैं, and the power to discriminate, the power to think stops. That's why one starts thinking कि जिंदगी बेकार है और जीना बेकार है, जिजीविषा मरने लगती है, जीने की इच्छा मरने लगती है. तो once we have the integrated development, and once we as children are allowed to pursue areas of our interest, so that will help us. If I love music, let me enjoy music. If I love drama, let me go to theaters and see drama. Everybody may not be interested in books, and definitely too much focus on results, or that does not help. Ultimately, life skills have to be taught. A person, if you fail, my previous discussion, I had highlighted 10 aspects of life skills as defined by UNICEF in the UN Charter, UN Charter on this. And SDG 4, the Sustainable Development Goal 4 also talks about this educational aspect. So these were my few submissions. Thank you. Thank you so much, Dada. And you included all national and international issues in this also. Thank you so much again. Now I will request Dada, I don't know his complete name, Raghu Dada from California. Do you want to share something? Dada, do you want to share something? Please unmute yourself first. If you want to share your opinion or your solution on this point, please unmute yourself. And if you are not convenient, then also you can say that. I think you can proceed further, Didi. Yeah. Okay. I think he is trying. Okay. Now I will request Vijay Lakshmi Didi. Vijay Lakshmi Didi, do you want to share your opinion? Yeah, I will. Sure. Namaskar. Good evening and namaste to everybody. So I really like the points which you raised, Sinha sir, about the 5 aspects. Integrated development is really good. But the point is, how do we inculcate these points in our children? That is the main concern here. So what I feel is that, see, we have seen some children attempt suicide earlier. So I think the parents have a major role in this than the society or anything. So we have to first sensitize the parents first, how to take care of the child who has attempted suicide in the previous thing. So they have to be very watchful with that particular child. So how will we do that? I think that is the first thing we have to first consider that, because see, we have seen parents nowadays, more than the peer pressure, the children are facing more of parental pressure, not the peer pressure. So peer pressure is become very, they're helping you best. Parents are concerned. Parents are putting a lot of pressure on the child because parents are not able to adapt to this generation. They're still in that previous generation, saying that during our times, it was like that. I think the parents should stop saying that. That is the first point which I've seen, because me being a psychologist, I've seen parents, who come and give complaints. See, it's not like that during our time. It is not like that. Why is it our children not listening to us, this and that and all this stuff? So I think the parents have to be sensitized first
and try to adapt themselves to the present trend to the children. Now we have seen, we are talking about children of age group between 15 to 24 years. So 15 years means teenage, and because of hormonal changes, how their emotions keep changing. And second is 24 years, that means early adulthood. That means this is a transformation stage from teenage to adulthood. So this is a major crux of the age group where they have a lot of pressure of education and career. They have choose some education, some group they choose, and the kind of job they're doing is something different. Then again, the parents say, during our times, we took PCB and we became doctors. We took PCM, we became engineers. But now the trend is not like that. Now, if you see the courses, there's a lot of combination of arts and science, commerce and management, that kind of combination that we as a parent, we have to get adapted to that and guide our children to focus on the career. Whichever education they take in the career, I think we have to help them out to come out of that. That means help them in decision making. First thing is that. So instead of helping the child making a decision, we are trying to put pressure on this child, saying that you become this profession, you become that profession. I think that's where the parental pressure is coming up, and children are unable to make a decision between what is good and what is bad, which profession is good and which profession is not good. I think as a parent, I feel that the reason behind the solution behind to stop this suicide is we have to first sensitize the parent and ask them to give some kind of support to the child, because the first thing, the present generation, they're more intellectual, they have more of IQ, they have more of intellectual quotient, but emotional quotient is very minimum. I think that's where we as a parent have to sensitize the child to become more emotionally controlled, self-controlled. As Sinha sir has said, we have to make them as an all-round development. I think we have to first focus on the emotional part of the child. That's when, because see, suicide is nothing but an emotional lack of emotional control, isn't it? It's in the trigger, it's in the last spur of the moment they commit suicide. I think we have to help the child, to overcome this emotional this thing. For that, we have to have an emotional bonding with the child. We are thinking as that we are having emotional bond, but we are not having emotional bonding with the child. We are having a conditional relationship with the child. If you speak the facts, we are becoming very conditional with the children, then giving them more kind of a support. That's what I feel. So the whole thing should come as solution to this stopping or minimizing the suicide. I mean, is the parents have to be sensitized and tell them to be updated with the trends and help the child to grow emotionally, not intellectually. They're intellectually very good because the kind of exposure, media exposure, YouTube, this and that, lot of exposure is that they have intellectually very highly intellectual individuals there. But emotions, as far as emotions concerned, they're very minimal. I think that's where we need to focus on to minimize this kind of emotion, suicidal attempts and all that. That's what I feel. I think I'm clear. Yeah, Didi, you are clear, and you are, I think, totally right. And we are also advocating this points also. And CPR Sarkar also advocates that parents should cooperate their children and they should have the emotional bonding. अब जो लोग इस डिस्कशन को इंग्लिश में अगर नहीं समझ पाए हों, शायद अगर एक दो लोग हो, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि हमारे दादा ने तो जो बातें कही वो तो पीआर सरकार से संबंधित थी, और यूएन का जो हमारा चार्टर है उन्होंने उसके भी डिस्कशन किया। और विजय लक्ष्मी दीदी हमारी काउंसलर हैं और ये बहुत अच्छी काउंसलिंग करती है। इनके बोलने की जो शैली है उसी से हम लोग समझ गए कि इनकी आवाज जो है वो बता रही है कि वो कितनी अच्छी काउंसलिंग करती होंगी। इन्होंने बताया कि पेरेंट्स को चिल्ड्रन के साथ इमोशनल बॉन्डिंग अगर अच्छी होगी तो ये सुसाइड वाली जो समस्या है वो अपने आप ही कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। आजकल बच्चों में इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं है, हम उस बॉन्डिंग को बनाने के बजाय इमोशनल बॉन्डिंग बनाने पर विशेष ध्यान दें। यही दीदी का विचार था शॉर्ट में। ऐसे सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, दीदी की भाषा मुझसे बहुत अच्छी थी। And second most important thing, now Sinha sir was talking about, it's when the children are more close with the mother. Maybe in those days, but in nowadays, both the parents have to become close with the child. And if both the parents are arguing, both the parents having different opinions about certain particular thing, then the children will be confused. We have to have only one point, only one message you have to be conveyed to the child, not two different. From father one opinion comes and from mother another opinion. Then you're confusing the child. That's where the child is confused. So again, you're putting pressure on the child.
So that is the Didi, second point. दीदी ये कहना चाह रही हैं कि मदर और फादर मतलब माता पिता दोनों का एक ओपिनियन हो तो बच्चों को समझने में सुविधा होगी, और अगर माता पिता ही दोनों दो राय रखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो मैं शॉर्ट में वो समझाने का प्रयास कर रही हूँ, बाकी तो सब अपने आप में समझदार है यहाँ, और सभी इंटेलेक्चुअल फेडरेशन हैं, तो इतनी बातें तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझते हैं। लेकिन कोई नए मेंबर हो, अगर उनको कोई कठिनाई हो रही हो तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी दीदी आपका जुड़ने के लिए, और हमारे साथ बनी रहें। प्लीज कंटिन्यू विद अस, प्लीज बियर विद अस। Oh, yeah, नाउ sure. आई विल रिक्वेस्ट मीतू सिंह दीदी, डू यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन दिस टॉपिक? Namaskar, Didi. Thank you for inviting me. And definitely, I want to say something on this subject. And देखिए इसमें the main key factor is new humanistic education, जिसके लिए हरानंद दादा इतना ज्यादा बोल देते हैं कि हम लोगों के लिए बोलने के लिए बचता नहीं है. So I will speak in a very non-margy approach, so that a common people we can also understand how to handle the situation when a person is non-margy. हम लोगों को तो बाबा ने इतना कुछ दे दिया है कि हम उसको बाय डिफॉल्ट फॉलो करते ही जाते हैं, चाहे हम उसको किसी भी तरह से करें. तो लेट मी स्टार्ट विद द लास्ट डिस्कशन. दीदी थोड़ा टाइम देंगी ना पूनम दीदी? जी बिल्कुल दीदी, आप ही का समय है. अच्छा अच्छा. सो वेयर अनुभूति सेड कि बहुत अच्छी बात चल रही थी जब LK अग्रवाल दादा ने कहा, ही सेड कि भाई शुड आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, किस में बात करूं? दोनों में कर सकती हूँ ना दीदी? सभी लोग समझ रहे हैं, बस वो विजय लक्ष्मी दीदी साउथ से थी, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझती ही होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझती. No, I can understand Hindi, not an issue. I can understand. I can't speak, but I can understand. ठीक है. I'll use both the language. LK अग्रवाल दादा ने लास्ट टाइम बहुत अच्छी बात कही थी that the parents they become over exaggerated, they become over enthusiastic when they see the marks of their children. 85% आया, 95% आया, take them to quota. ठीक है. But अनुभूति said कि even a 60% scoring child can also attempt any merit examination, with which I also agree with her. But you know, Anubhuti, that zeal should be there in the student, not in the parent. Problem आती है when the parent, because nowadays no parent is teaching 11th, 12th student. It's beyond their capability. सारा syllabus change हो गया है. Way of teaching is also changed. ये जितने coaching center हैं, ये basically ready-made mark generating center बन गए हैं. They are not actually teaching you the subject. They are actually teaching you how to secure a subject, how to get highest marks in the subject. So parents cannot justify, cannot verify the capability of their son. How they check it? By just getting कि हाँ मेरे बेटे का 95% है, go and take him for quota. Yeah, ask him to attempt for JEE Main or JEE Advanced and go admission for IITs or any reputed college. So their expectation becomes very high after seeing the result of a child is not at all justified. And I agree with LK Agarwal Dada. Here I quote an example that in 2014, when my son, he did his 12th examination, he secured pretty well. There was a boy called Sarthak Agrawal who got 100% marks in CBSE. आजकल तो बहुत लोगों के आ जाते हैं, but that time he was the only one who got 100% marks. And can you imagine that St. Stephen College, Delhi का बहुत ही prestigious college है, he opted for that college and he was declined for the admission because he was not able to crack the interview. St. Stephen College में interview होता है and he was not able to crack it. जिसके 100% marks है. So marks is not a correct criteria. बाद में उसने SRCC लिया और आज वो कहाँ है? Maybe he might have become IAS or something like that. लेकिन वो एक क्राइटेरिया नहीं कि आप अपने बच्चे को जबरदस्ती प्रेशराइज करो until unless a child has a zeal in it. तो ये तो बात हुई लास्ट कन्वर्सेशन की. आज I want to quote Shri Shri P.R. Sarkar that there is a defeatist complex. Defeatist complex. Defeatist means defeat, defeater and defeatist complex.
oh, I am defeated in this world. This is what a child think when he is taking the dash step of suicide. The word defeatist, मैं तो बोल भी नहीं पा रही इस word को. That is the boldest word I have read by Shri Anandamurti. मैंने इतने novels पढ़े, इतने बड़े बड़े critics को पढ़ा, इतने बड़े बड़े authors को पढ़ा, because I was a student of English literature. But nowhere I read this word defeatist. हिंदी के भी नॉवल में ये है उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी हार थी या सबसे बड़ी हार थी. Even that word does not justify this term defeatist. So ये जो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है which tells कि it is beyond repair. अगर कोई आदमी ये सोच रहा है, that means he has reached to a situation where it is beyond the psychology of helplessness. It is beyond the psychology of hopelessness. So we must consider this word defeatist in a very, very serious, because suicide is a serious disease than the cancer or any other disease in the society. और इस टाइम पे आगे श्री पी.आर. सरकार क्या लिखते हैं, that such a sentiment that boy finds his death more pleasing, more comfortable than life. जब ये सेंटेंस डिफीटिस्ट साइकोलॉजी उसके अंदर डेवलप हो गई, तो he feels that मरना ज्यादा आसान है, मरना ज्यादा खुशनुमा है as compared to जिंदगी के. So when this sentiment comes, वो हमें समझना पड़ेगा, when this sentiment comes, then he takes this step. कोई भी मरना नहीं चाहता. Even a 95-year-old man who knows that he is going to die one day, even he also want to live little more life. वो कहता है कि मेरे लिए हर दिन एक bonus day है. So, but this boy who has a syndrome called defeatist syndrome, he wants to die because for him death is more pleasure than the life. अब solution पे आते हैं. Now I'm talking about non-marking, please. Solution में क्या होता है? Everybody say one word, counseling. Yes, counseling is a very strong tool. Counseling से बहुत चीजें बन जाती हैं. But when will we do the counseling? हमारे पास टाइम कहाँ है काउंसलिंग का? क्या सच में हम काउंसलिंग कर सकते हैं उस बच्चे की who is standing on the verge of death in life? We know suicide decision is an impulsive decision. Suicide जो है लोग बड़े impulse में आकर लेते हैं. When that impulsive movement pass away, then there are many suicides which get cancelled. वो impulsive movement निकल जाए आदमी छोड़ देता है. I read this in the Kalam's biography. Abdul Kalam also went for suicide in his student life at Rishikesh when he was seeking for a job or something like that. And that he said, when that moment passed away, I regretted on my decision why I went to Hilltop for the suicide. तो काउंसलिंग आप कब करोगे जब इतने इम्पल्सिव डिसीजन में हो सकता है आज रिजल्ट आया शाम तक न्यूज आ गई द चाइल्ड did the suicide. 3 दिन बाद आ गई, 4 दिन बाद आ गई, 10 दिन बाद आ गई. प्रॉब्लम ये है कि टाइम ही नहीं रहता है. एंड सपोज यू हैव द टाइम, चलिए टाइम भी है, देन देयर इज अनदर ड्रॉबैक इन द काउंसलिंग. देखिए मैं काउंसलिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ. When I'm talking about something negative about the counseling, it doesn't mean कि मैं काउंसलिंग के अगेंस्ट हूँ. मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ कि हमारे हाथ कहाँ बंधे हैं. Even if we feel that we should do the counseling where we are tied up. You see, the student who is in the depression, there's another drawback. He doesn't want to listen to you. You are trying to do the counseling for that boy or for that children or for that student who is not at all ready to listen you. You go to bedroom, a mother goes to bedroom to talk to a child. What he does? वो वहां से उठ जाता है, he comes to drawing room, टीवी के सामने बैठ जाता है. Mother also comes back to the drawing room, sits on the same sofa where the child is sitting. तो बच्चा क्या करेगा? He will go out of the home on one pretext or the other. मैं नीचे जा रहा हूँ कह के वो निकल जाएगा. He will not allow you to talk. So this is basically a mental condition, and I strongly
advocate the interference of medication at this moment. हमें मेडिसिन का भी ध्यान देना पड़ेगा. I request all my fellow brothers and sisters that we should take this part also seriously, that medication also is required when there is a tendency of suicide. And there are not many chemicals are released when somebody thinks of suicide. बहुत सारे chemical release होते हैं that needs treatment. And in allopathy, it is named as. Sorry to interrupt here. I just want to give a clarification here. See, we are talking about counseling. See, counseling cannot be done by the parent. It is called as mentoring. There's a lot of difference between mentoring and parenting, mentoring and counseling. No, Didi, I'm talking about counseling is when you know that the patient is in depression. Parenting is when you know the child is growing with you. Okay. I'm talking about counseling. Counseling means when you know that he is in depression, he needs your help. And you find that counseling is a tool to help him. Go and talk to him and suggest him that beta, ठीक है, इस बार नहीं आया marks, let's try something else. या चलो तुम यहाँ पर ध्यान दे दो. So this is what I'm talking about, the counseling. Counseling or parenting is two different things. Yeah, that's what I'm saying. Parenting, counseling, and mentoring, three are different. Yes, all the three are different. I fully agree with you. I fully agree with you. Yeah, that's what I wanted to just clear. Yeah, please proceed. Correct. Thank you very much. So now what the allopath says, मैं allopath पर आती हूँ. They call it as MDD, major depression disorder. And in Ayurveda also there are some treatment like ashwagandha, saffron, flower therapy. There are some therapies which can be helpful for a child when we talk about the suicide tendency. In homeopathy also there is a treatment. There are not many medicines, especially homeopathy and Ayurveda. They are more successful as far as the treatment of these kind of tendencies are there. This communication cannot be completed until I give you an example of my son. दीदी किसी का वॉइस आ रहा है, आप थोड़ा उनको रोक देंगे? Yeah, Didi, you can continue. My son also had this phase. बहुत खराब phase था. He just completed 12th and he was not ready to talk. So what I did is I administered homeopathic medicine, Califos. Califos is I think many of you know that it is a good nervous tonic. So I started giving him the Califos, which I used to give him even when he was studying in 11th, 12th, 10th. So I started continuing it. And later I gave him, जब मुझे लगा कि he is still very serious, I took a medicine called Ignatia Amara. This Ignatia Amara is a homeopathic medicine that triggers. So I gave this medicine in a glass of water without telling him that I am administering this kind of a medicine for this cause. And can you imagine, after 2 days of this medicine, on the very third day, in the morning while going to college, he said, "Mummy, मैं college जा रहा हूँ. आज शाम को आके ना बैठ के हम लोग बातें करेंगे. I want to discuss with you." So bringing him to the table of counseling, who helped me? It is the medication. There are some hormones which I just noted down. CRH is a hormone, corticotropin releasing hormone, which is when it is in high concentration. Then there is a low level of serotonin that is also responsible. Then there is a neurotransmitter where, like GABA. What it does, it block all the brain signal. Look, soch hi nahi paate what I am doing, is it correct or not? So these are the medical findings which found responsible for the suicide. Now I come to another point that is called parenting. इसमें दीदी मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी because I already spoke about this point earlier also. What we do is we give our maximum attention, we give maximum facilitation when the child is very young. But ulta hona chahiye. When the child is very young, he needs your facilitation and less of attention. Thoda attention do, maximum facility do. Usko best school do, usko best food do. But when the child crosses the adolescence,
at that time so many glandular changes, so many hormonal changes take place. उस वक्त उस child को attention, companionship must है for every child, चाहे वो कल सुसाइड करे, चाहे वो कल सुसाइड ना करे, चाहे आज उसका सब कुछ ठीक चल रहा है, even then when the child reaches from the age 14 onward, जब तक वो 25 साल का ना हो जाए, 20-21 साल का ना हो जाए, उसके साथ आपको मैक्सिमम अटेंशन देनी है. Women sometimes think, mother think अब तो बड़ा हो गया, he can handle himself. They are absolutely wrong. Parents को उसके साथ मिलना है, mother because they are psychologically more close to the child, as Haranand Dada said. So they should speak. I feel very happy, very very happy. जब रात को मेरा बेटा, he is in Bombay, he said, मम्मी मेरा जो friend है ना आशीष, उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, उसने उसको इनवाइट नहीं किया. See, he is talking to me. These all things are of no use to me, but I speak with him, and that speech is the trust. इसको आपको रखना पड़ेगा. So, and last point is, which is again from the medical point of view, I want to say, parents must see कि बच्चा किसी चीज के साथ obsessed तो नहीं है. Obsession is a kind of a disease which may lead to depression. So please look at it. चाहे वो खेल के साथ है, he is playing cricket very well, but he should not be obsessed. He is doing so much study, he is doing so good study, but he should not be obsessed with it. So obsession जो है, that leads to generate negative sentiments in the psychology of a child, which one has to be very careful. Thank you, Didi. Very very thank you. मैंने बहुत time ले लिया. Thank you so much. थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया है और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी टच किया है. अभी मैं रघु दाशु दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करे. कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ दादा? रघु दादा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, I think he is not able to unmute himself. Okay, no problem. I will request Surinder Reddy Dada. Are you there? Surinder Yes, Reddy ma'am. Dada. Yes, I'm there. Yeah, I'm welcoming Namaskar. you. You Namaskar. entered late, Dada. Okay, we welcome to a very Namaskar to warm all of welcome to you. our forum. And now I will request you to please share your precious opinion among us. See, among many professionals here, I think please do not take my commentary as of any deep value. But however, No, everyone's opinions matters, Dada, and you have your own experience. However, it is only out of what you call my personal interest, perhaps I may be able to contribute in saying in certain things. We should be again looked at by others little more carefully what I say about these things. Basically, what I feel is that there should not be any sense of nowadays, the families have become nuclear. Nuclear in the sense that they have become very, very small. Earlier, there used to be large families with people ranging from various age groups. Used to be a grandfather, there used to be a father, there used to be a brother. There are so many people were there of various ages. Different ages, people coming together and running a family. So it had a different complexion. See, that kind of things are not today, not possible. We have to live with this. And second aspect about is the nuclearization of family is one part. Second part of it is that we are increasingly becoming urbanized. So there is they say that in future the urbanization will go beyond 50%, 60%, 70% like that. See, already the whole world now slowly moving towards what you call urbanization. Rapid urbanization is going on at a pace. So there is a difference between rural area and also in urban area, in the sense that urban area gives you anonymity and rural areas give you familiarity. See, the familiarity has something to do with certain sharing things. People know each other. So there is a kind of affinity between them.
there is a kind of fraternity between them, which is natural and all. So it is a more congenial kind of atmosphere in rural area. But can we reverse the urbanization? Perhaps not. So urban area breeds anonymity. Anonymity also breeds crime also. Anonymity and familiarity. So the more people come together, know each other, see there will be less tendency towards a negative thinking and negative ideas. So you can see that crime rate goes on increasing as urbanization goes on increasing. So because the trend is towards somebody thinking that he can get away with any kind of behavior. So this also because when others, they feel that they are being watched, they are being under, somebody judges him, somebody, responds to them and cares what he says or what he doesn't say, what he says as well as what he doesn't say. So those things are cared for. So then the people will try to be careful in dealing with others with a certain way. So what I personally feel is that for our children to take care of both things, the nuclearization of family and also the urbanization, which gives kind of anonymity. So we do not know who is our neighbor. There is no familiarity with each other. We do not know what their concerns are. We do not know what our concerns are. So we live in isolation, actually, in urban areas, for example. Well, even personally, though I talk about it, I can tell you that I live in a complex where about 20 apartments are there. And one of the apartments, maybe I was there for more than 15 or 20 years now. But I do not know who is who there, most of except for maybe a couple of people. So basically, what is happening is that people have a diffidence in communications also in urban areas. And so what I suggest is that we must encourage our children to be part of micro fraternities. What is, you might say, what is a micro fraternity? Micro fraternity is a kind of common interest groups, CIG, you can call it even CIG also. But people are interested in chess, we come together. People are interested in football, they come together. Or let us say studies, they come together. So the micro fraternities, parents should enable the micro fraternity. That is a peer level, see they have friends. Yeah, you should encourage friendship. You should encourage, what about Dharma Chakra? Dharma Chakra is a micro fraternity. Let us say a proud study group, proud study circle. Yeah, it is also a micro fraternity. So the whole world today, fortunately, for example, today we are meeting. Maybe how many members are, we are a micro fraternity. Though we may call ourselves differently, but we are 10 members here. We are a micro fraternity. So in fact, millions of micro fraternities are possible today in India because in the world today, because of technology. Technology enables us today to promote the culture of micro fraternities. I believe that future, the world without future of society, social mixing or socializing would be okay. There will be hybrid kind of meetings, like some people online, some people offline. And these are ultimately our kind of micro fraternities. So these micro fraternities culture should be promoted. I do not know because I see many, especially in India, in our own communities, there is a lot of diffidence about mixing with others, saying, looking at various distinctions. I'm not talking about Margis, I'm talking about general non-Margis also. See, they always should not mix with those people, you should not mix with these people, or they are different caste, we are a different caste. So this kind of discrimination of attitude also helps people to, or rather people make people have this sense of superiority or inferiority complex or a superiority complex, are those things, these are not to be promoted. So we have to promote the human affection and love in general, and let it be a purposeful also. It need not be, I'm not saying that it takes shape. See, the affection also takes shape in camaraderie of the children with others. So the camaraderie has to be promoted. What we can do for that?
how we can promote our children to mix with, or rather share with others, friends. I'm not talking about crowds. I'm not talking about groups, let us say. But of course, you also can say, well, this microfraternity, would it be of, can it be of negative nature or negative activity? Well, I think that it is always there, but I think that there is always, because you will always be there in monitoring or kind of stuff. And see what things which are more than 5 members in any fraternity group. I think it tends to become social rather than antisocial. Then 90%, because human beings by nature are oriented to what you call good disposition. I don't think the human beings have got a bad disposition. So the good disposition definitely comes out. So I feel that microfraternities, children should be allowed to become part of microfraternities, enable them to be a part of microfraternities, and that would help them to get out of depression, isolation, and all such. And the third thing, okay, these two things are focused, that the ills of nuclearization of family, inevitable, the urbanization of our social living, it is inevitable. Those two things we are trying to handle. We can handle through microfraternities. That's what I believe in. And third thing also is that the parents should stop what do you call pressure, what do you call the competitiveness. See, you should not compare people. You should not compare them. See, comparison is very odious. I rather say it's wrong or bad kind of. So we have to see that everybody is unique in his own way. So we should be allowed to bring out his own potential rather than trying to compare him with others. So that means this that he is first rank, his second rank, the grade culture. Let there be not any grade culture. So there should not be any grade culture. So everybody has its own value, existential value on this. So importance should be given. So the grade, maybe suddenly it comes back to my favorite subject nowadays. That is ChatGPT. Rather, your artificial intelligence tools have come in the world today, which they say are going to transform all the sectors, including education. So I was the other day in a board meeting of Karadar, an educational institution, where we are discussing about this thing. And it was said that discussion was, see, the Google has converted the information into a commodity. Information is no longer something you acquire. See, it is available to everybody, it is a commodity. So today, after nearly 20, 30 years of Google has converted information into commodity. Now, the artificial intelligence tools of the what is going on in the line of the track of ChatGPT, because many more versions are coming. It's not the only one. So many more capabilities, exponentially increasing capabilities are coming up. So these tools are going to ultimately make knowledge also a commodity. Earlier, only information was a commodity. Today, knowledge also is going to become a commodity. So what remains of human value is his temperament, his frame of mind, his psychology, his attitude, so and his skills. So these are all the people say that now what people need are skills, not knowledge. So we require skills. Skills is applied knowledge ultimately. So these are all things. So now skill centric. Today, tomorrow's world is not knowledge centric. Somebody is a scholarly person or having high class A grades and all that. Not the point. The point is how skillful in life in all aspects. Dakshata bolte hain. Daksh. Kya daksh? So कार्य दक्षता. तो उसको चाहिए, आपको निष्काम कर्म भी चाहिए, उसकी एटीट्यूड भी चाहिए, detached activism भी चाहिए. So these are the things, qualities that have to be instilled in the minds of all our children. I think there is a bright future, and the world is also, see, another new revolutionary kind of vision that's coming up, that we are, see, 21st century is going to be
the world of abundance, not of scarcity. See, we have had economy of scarcity, but in future, we are going to have the economy of abundance. So these are the things we are witnessing today, and we are happy. We are happy to live in this time. We are happy to live in this age, wherein we are witnessing a new, say, revolution again, as important as the internet, or let us say, they say talk about printing press. See, as important as the printing press was invented. So they say that this particular chat GPT also is as big an invention as the printing press, which is going to increase our abilities and this thing. So we are going to enter a new world. So the youth have to be inspired by what you call futures thinking. Because our proud also the future economy, which is future ready. We are a economy which believes in leisure, not in work. It believes in leisure so that you can apply your mind to higher pursuits, meditation, yoga. So this is a tantra culture that we would like to look forward to. So if children are given the vision of this brave new world, I don't think there will be anybody who will look at in a negative sense, or feel isolated, or lonely, or alienated. This is a brave new world, let them participate in it. So this is really the choice, this is the option, or rather the opportunity that children have today. They are looking forward or entering a new world, a brave new world. So thank you very much, having heard me for Thank you so much, Dada, and very encouraging words and with positive thought. Thank you so much for joining and contributing yourself. Please bear with us. please. Now, anyone want to say something? Then please raise your hand. Pooja Kumari, do you want to share your opinion? And if not, Vandana Didi, do you want to share something? Vandana Didi? I think she's not able, she's not comfortable. Now I will request our Geeta Raul Didi, please unmute yourself. Geeta Raul Didi. दीदी Namaskar Didi. दीदी मैं सभी लोगों ने तो बहुत अच्छा मतलब पॉइंट्स क्लियर ही हो गए हैं अभी। विजया दीदी ने तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, हरानंद दादा ने तो सारे हमें बातें क्लियर कर दी, बाबा ने जो भी कहा है। मैं मीतू दीदी को थैंक्स बोलना चाह रही हूँ। उन्होंने जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शी इज रियली बोल्ड। हमेशा वो आगे आकर जो भी सच है वो बोल के क्लियर कर देती, कभी भी उन्हें ऐसा हिचकिचाहट नहीं होती है कि मैं ये कैसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स आता है कि ये कैसे बातें करें, ये लोग इतना डिस्कस करें, मैं कुछ बीच में बोलूं या कुछ इस तरह से। मुझे वो इतना मस्त है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई जस्ट रियली वांट्स टू से थैंक्स टू मीतू दीदी, रियली यू आर रियली बोल्ड एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सच्ची में। थैंक यू वेरी मच। ये पॉइंट्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। मीतू दीदी तो खैर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप भी कैमरे के पीछे रह करके बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट करती हैं, और आप में ये एबिलिटी है कि आप बहुत कुछ शेयर कर सकती हैं, लेकिन करना नहीं चाहती हैं, बहुत कम शब्दों में निकल लेती हैं। थैंक यू सो मच गीता दीदी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट, ओके, डू यू वांट टू शेयर समथिंग गीता दीदी? Just wants to say thanks to you too. You're really great. Thank you so much, Didi. Now I will request Anubhuti Didi. Anubhuti Didi, do you want to share your opinion on this topic? Anubhuti Didi, are you comfortable? दीदी आई थिंक शी लेफ्ट, अनुभूति है नहीं अभी तो थी दीदी, अभी हो सकता तुरंत लेफ्ट हुई। अच्छा, नाउ आई विल रिक्वेस्ट, डीएमएस की वजह से और बहुत सारी साइमल्टेनियसली एक्टिविटी रिपोर्टिंग चल रही है, तो आज थोड़े से नंबर्स कम है हम लोगों के। ओके ईटीसी सब अभी बस ईटीसी तो हम लोग का अभी खत्म ही हुआ है,
ETC वगैरह चल रहा होगा, ETC से जुड़ी रहती हैं। अभी आई विल रिक्वेस्ट वंदना दीदी, डू यू वांट टू शेयर योर ओपिनियन? Vandana Didi is here. Am I audible to her or not? I'm not confirmed about that. Pooja Kumari Didi, do you want to share your opinion? I think most of the people left and 1 hour is also complete. What should I do now? Bitu Didi? Bitu Didi? Neetu Didi, will you help me? No speaker is left now. I think 1 hour is over. We should conclude now. Neetu Didi is also not responding. Any problem with you, Didi? And if she is not responding, I would like to. Anyone want to say something? There was a last topic also related to law. For that, I would like to say something from the electronic addition, which PR Sarkar is saying. And after that, I will conclude this session. Something prevails in society also, that is called vice and virtue. In the most countries, crime is defined with the reference to a sense of paap, vice, and punya, virtue. These have their roots in the religions of individual countries. For example, English people customarily believe that suicide is one of the gravest sins. According to the customary belief of Indian, suicide is considered to be a sin, but it is not a grave sin. And the Japanese do not consider suicide to be a sin at all. That is why the penal codes of these three countries are different. In Japan, neither suicide nor attempted suicide constitutes a crime, and thus neither a punishable offense. In India, today the attempt to commit suicide is a crime, but suicide itself is not. Hence, only the attempt to commit suicide is a punishable offense, and in England, the attempt to commit suicide and actual suicide are both crimes. Hence, both are considered to be punishable offenses. So those who rend the air arguing about vice and virtue are not usually listen to the outside their own countries. Now I am seeing on the screen Pradum Narayan Dada. So I'll request him to please share his opinions. He is much experienced than us. प्रद्युम्न नारायण दादा, आप 2 शब्द कहें अपने श्रीमुख से। नमस्कार। नमस्कार दादा। तुम लोगों की बात सुनकर तो हमको लगता है कि तुम लोगों की बात ही हम सुनते रहे, और तो समस्या को प्रेजेंट करने की तुम्हारी जो दक्षता है, उससे हमको बड़ी खुशी होती है। और जिस बारीकी से तुम समस्या को समझती हो और उसके समाधान के विषय में कहते हो, तो उसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, लेकिन मुझे आपके मुख से सुनने में बहुत आनंद आता है। अब आप आ गए हैं तो कुछ टाइम तो हम लोग लेंगे ही आपसे। आज मीतू ने हमको मजबूर कर दिया कि नहीं, आपको आना ही है। हालांकि हम अभी अपने गांव में हैं। कोई बात नहीं दादा। हाँ, तो उसका आग्रह रहा मीतू का कि आपको आना है। हमने कहा कि चलिए, जब आपका आदेश है तो हम थोड़ी देर के लिए आप लोगों के बीच आ जाएंगे। तो यह समस्या तो इतनी जटिल है आज समाज में, सुसाइड की, आत्महत्या की, तो बहुत आसानी से इसको समझा भी नहीं जा सकता है, और इसका समाधान भी बहुत आसान नहीं। आज हमारा जो हमारी जो सामाजिक संरचना है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, वो सबका सब एक इस तरह से है कि हमारे जो युवा हैं, आज उनकी जो इच्छाएं बढ़ गई हैं, उनकी जो कामनाएं बढ़ गई हैं, और अपने कैरियर के प्रति उनमें जो एक अदम्य लालसा पैदा हो गई है, तो उसके सामने उड़ान भरने का कोई आकाश नहीं है।
वो देखता है कि बस सामने केवल एक आकाश है और उसमें इतनी प्रतिस्पर्धा है और इतना कंपटीशन है कि उसमें एक दूसरे को पछाड़ कर आगे निकलने की गुंजाइश इतनी बारीक रहती है कि अब इन युवाओं की जो संवेदनशीलता है वह इतनी, हम क्या कहें कि अ, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और जिसको सहन करना उसके लिए सहज नहीं होता है। और वो चाहता है कि इससे निजात पाने के लिए हम किसी अज्ञात लोक में शरण लें। ये सुसाइड करने के बाद जो अज्ञात लोक है उसके विषय में तो उसकी कोई धारणा नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद हो सकता है कि वहां कोई राहत मिल जाए हमको। तो इन सारी बातों को समझने की जरूरत है और यह चुनौती बहुत बड़ी है। यदि हमारे युवा इतनी छोटी छोटी बात पर, आज तो हम देखते हैं कि किसी लड़के ने बाप से मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं दिया, उसने जाके आप क्या कर ली। किसी बच्चे को डांट दो कि तुम कहा इतना गेम देख रहे हो मोबाइल पर, वो आत्महत्या कर लेता है। तो जहाँ परिस्थिति इतनी जटिल है तो वहाँ कम से कम हमको एक मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें हमारे युवा बात बात पर, छोटी छोटी बात पर इतना इमोशनल न हो जाए कि उसको किसी अज्ञात लोक में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए एक आशा बन जाए कि हो सकता है कि हम इस जीवन को यहाँ समाप्त कर दें और फिर किसी दूसरे लोक में हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो इसके लिए बहुत बड़ी काउंसलिंग की आवश्यकता है। जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको सही करने की जरूरत है। हमारी जो रोजगार की अवस्था है, अभी हमने एक समाचार पढ़ा था कि यूपीएससी में एक लड़का वो इंटरव्यू में जाने वाला था, तो उसको पता चला कि वो उसके, आजकल तो युवाओं में एक शौक है कि वो देह पर टैटू बहुत ज्यादा छपवाते हैं, बाह में, गले में, तरह तरह का आज एक फैशन हो गया है। तो उसको पता चला कि इंटरव्यू में यह टैटू जो है वो बड़ा निगेटिव है और ये उसमें छटनी की आशंका है, और यह सुनने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। तब उसके सामने लगा कि कोई विकल्प नहीं है। अरे आज प्रशासनिक सेवा में हमारे जो सबसे क्षमतावान युवा हैं वे जा रहे हैं और उनको यह नहीं लगता है कि एबीसीडी नहीं जानने वाला एक गंवार आदमी उसको चला रहा है, उसकी जी हुजूरी करनी पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे युवाओं में समझ पैदा करवाने की जरूरत है। उसकी अच्छी काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको हम मजबूत करें ताकि मानसिक रूप से हमारे बच्चे सशक्त हों और छोटी छोटी बातों के लिए उनको अपनी जान की बाजी लगानी नहीं पड़े। यह जान बड़ी कीमती है और यह आदमी का शरीर कितने जन्मों के बाद मिलता है इसकी कीमत भी समझने की जरूरत है। तो इस तरह से हमको एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा और इसके लिए सारे शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनमें भी युवाओं को मोटिवेट करने की जरूरत है। जीवन के लक्ष्य को समझाना है, जीवन के उद्देश्य को समझना है कि यह मनुष्य जीवन यूं ही छोटी छोटी बात पर आत्महत्या करके समाप्त देने वाली नहीं है। यह इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि इससे कीमती इस सृष्टि में दूसरी कोई चीज ही नहीं है मनुष्य के शरीर के सामने। तो इस कीमत को समझना पड़ेगा और इन बातों को समझकर ही हम अपने समाज का, अपने भला युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, भला कर सकते हैं
और आप लोगों ने एक अच्छा विषय चुना है। समाज में जागृति बढ़े, समाज में चेतना आए, हमारे युवा इन बातों को समझें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ दादा एक सवाल आपसे मेरा है। जी मैंने एक पत्रिका में, प्रौद्ध पत्रिका में कभी एक आर्टिकल निकला था, उसमें मैंने पढ़ा था, आपको इसकी शायद जानकारी विस्तृत में हो तो आप मुझे बताएंगे कि ये जीवन जो सुसाइड करके समाप्त कर लेते हैं, उन्हें फिर कोई शरीर ही नहीं मिलता, नहीं मानव शरीर की बात ही नहीं है, कोई भी शरीर नहीं मिलता है, प्रकृति द्वारा ऐसी व्यवस्था। क्या इस पर आपको कोई नॉलेज है? नहीं, देखो, शरीर उसको मिलता है अब जो मान लो कि साधना कर रही है। इस शरीर से तुम इस जन्म की साधना पूरी नहीं कर सकते और किसी कारण से शरीर का अंत हो, तो तुम्हारी साधना जो है जितनी की हुई है वह समाप्त नहीं होगी। अगले जन्म में फिर वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। लेकिन जहां तक इस तरह से बिना किसी लक्ष्य के शरीर को समाप्त कर देने की बात है, तो यह इसके पीछे तो बिल्कुल ही एक ऐसी भावना काम करती है जिसमें आगे के विकास का रास्ता जो है वह बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। उसीलिए उसको कितने जन्मों तक एक शरीर रहित अवस्था में रहना पड़ेगा, उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि 100 जन्म, कितने कितने करोड़ वर्ष लग सकते हैं। अगर इसकी गहराई से जानकारी दी जाए बच्चों में, शुरू से ये बात भरी जाए, तो मुझे लगता है कि इस बात को जानने के बाद ही लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ये जीवन हमें साधना करने के लिए मिला है, लेकिन ये चीजें बताई नहीं गई उन लोगों को, इसलिए ये इस तरह से सोचते हैं कि हम खत्म करके बस मुक्त हो जाएंगे। तो हमारी शिक्षा में इसका कोई महत्व नहीं है ना। हमारी शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक शिक्षा का, जीवन के उद्देश्य का, जीवन के लक्ष्य का किसी भी तरह से समावेश ही नहीं है। हमारा जो पाठ्यक्रम है, कितने शिक्षा आयोग बन गए आजादी के बाद से, तो बस उसी एक धरने पर चल रहा है। अब हमारी जो गुरुकुल की व्यवस्था आई है, या पहले भी जो गुरुकुल थे, तो उसमें तो समग्र जीवन की शिक्षा दी जाती, ठीक है। जीवन को खंड में बांट करके कि यह भौतिक है या मानसिक या आध्यात्मिक है, तो अभी तो पूरी तरह से हम भौतिकता में उलझे हुए हैं। भौतिकता ही हमारा लक्ष्य है और इस भौतिकता के स्तर पर हमारे लिए साधन सीमित हैं और उस सीमितता में लक्ष्य प्राप्त न करवाने की वजह से अब इतनी तीव्र एक इमोशनल आउटब्रेक होता है बच्चों में, तो वो जीवन को समाप्त कर देते हैं। जीवन का महत्व उन्होंने समझा ही कहाँ, और जीवन के महत्व को हमारी शिक्षा व्यवस्था में समझाने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। यही तो व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य वचन हमारे बीच रखने के लिए। अगर हम माइक्रोवाइटा को समझें तो निगेटिव माइक्रोवाइटा का कंसंट्रेशन जहां होता है वहां पे लोगों की सुसाइड की मानसिकता बनती है। उस निगेटिव माइक्रोवाइटा का नाम श्री प्रिया सरकार ने कबंध बताया है। और जहां अगर बच्चों को शुरू से ये ट्राइफेरियस स्ट्रक्चर है, फिजिकल है, साइकिक है और उसके बाद स्पिरिचुअल है, तीनों क्षेत्रों में डेवलपमेंट करना है, बैलेंस में लेके चलना है, अगर ये बात उनको मालूम हो तो शायद वो कभी इस तरफ सोचेंगे भी नहीं। लेकिन उन लोगों को ये बातें बताई नहीं गई, हमारा गुरुकुल सिस्टम क्या था, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे हो, हमारा साइकिक डेवलपमेंट कैसे हो। सिर्फ किताबें लोग पढ़ते हैं और भौतिक ज्ञान बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति वो सोचते नहीं है, माइंड का डेवलपमेंट कैसे हो इसके प्रति वो कोई प्रयास नहीं करते, और योगा साइकोलॉजी को वो जानते नहीं है। और हमारा सिस्टम, अभी एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं है, बहुत जगह तो पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है। अगर इन चीजों को हम लोगों में अवेयरनेस लाएं तो मुझे लगता है कि इन चीजों से भी हम बहुत हद तक इससे छुटकारा पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। दीदी एक सेकेंड, दिलीप सागर दादा हैं, आप प्लीज उनको इनवाइट कीजिए। लगता है वो काफी लेट रिक्वेस्ट जुड़े। है दीदी। ओके ओके ओके।
दिलीप हाँ, सागर हाँ, दादा, I आपका will स्वागत say है हमारे सेशन में। आप काफी लेट जुड़े हैं। ओके, अब आप अपने आप को कंट्रीब्यूट, जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें प्लीज शेयर करें। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। दादा हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं आपको। एक मिनट। नीतू दीदी, क्या आप कुछ हेल्प कर सकती है? दादा की आवाज नहीं आ रही है। दादा थोड़ी देर के लिए माइक रिमूव करके वैसे ही बात करिए। कभी कभी माइक जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता है जूम के उसके साथ। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है दादा। दिलीप सागर दादा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक रिमूव कर दीजिए। हाँ, ये स्पीकर रिमूव कर दीजिए, फिर बोल कर देखिए। हेलो। जी अब आ रही है। हाँ दादा, अब आ हेलो। रही है। जी जी दादा, नमस्कार दादा, आपका स्वागत है। नमस्कार दादा, आपकी आवाज अब आ रही है, बोलिए आप। हेलो। जी दादा, अब आवाज आ रही है, बोलिए। अब अब दादा दादा हम नहीं सुन पा रहे को लग रहा नहीं है। सुन पा रहे। दीदी आप उनको मैसेज कीजिए, लिख के मैसेज कीजिए। हेलो। हाँ, कर रही हूँ। हेलो। या दादा आप बोल सकते हैं दादा। मुझे आप लोग की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी दादा, जी दादा आ रही है। आ रही है आपको? ओके। जी जी अब सही है। आवाज आ रही है दीदी? जी जी आ रही है। ओके। ओके, ओके। आप लोग की आवाज नहीं आ रही, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप कोई बात नहीं। पता नहीं क्या हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। एक्चुअली जो आज का विषय है कि ये जो बच्चे हैं सुसाइड करते हैं, उसके मेरे ख्याल से बहुत सारी चर्चाओं में आप लोगों ने उसके बारे में सभी ने बताया ही होगा। मैं एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी बात रखता हूँ। हो सकता है उस आपने कवर कर लिया हो, नहीं किया होगा तो फिर उसको हम लोग फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ये आदमी की जो फिजिकल नीड्स हैं, उसकी जो पंचमूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, वो कहीं न कहीं गारंटीड हो तो आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। आज के समाज में क्या हो गया है, वो सिक्योरिटी नेट नहीं है, और इस कारण से माँ बाप भी बच्चों पर बहुत प्रेशर डालते हैं, और बच्चा भी समझता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए या किसी तरह से हम समाज में सफल नहीं हुए तो उसका जीवन वैसे भी विपन्न रहेगा। तो जो जीवन विपन्न रहने वाला है, तो उससे अच्छा कि उसको समाप्त कर लें। तो वो एक मूलभूत कारण है। यह जब प्रौद्योगिकी की व्यवस्था होगी, जहाँ सोशल सिक्योरिटी की बात होगी, तो मेरे ख्याल से ये जो समस्या है उसका समाधान बहुत कम, मतलब ऐसे केसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, सुसाइड के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुसाइड अमेरिका में नहीं होता, या सुसाइड जहाँ पर बहुत लोगों के पास पैसा है वहां पे वो भी सुसाइड करते हैं। अपने देश में भी जो बहुत सारे संपन्न लोग हैं, तो वो कुछ लोग साइकोलॉजिकल कारणों से करते हैं, कुछ लोग भौतिक कारणों से करते हैं, कुछ लोग उनको लगता है कि हमारा समाज में मान सम्मान नहीं है, मुझे कोई देखता नहीं, मुझे कोई करने वाला नहीं। लोग बुढ़ापे में भी सुसाइड कर लेते हैं, उनके पास में सब कुछ है। तो हर एक आदमी के लिए कारण बहुत भिन्न हो सकता है, लेकिन अभी बच्चों की बात जो चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हमारे देश में यदि होता, हर एक वयस्क को ये पता चलता कि जब मैं 18 या 20 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद से हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होगी
जिससे कि उसका जीवन यापन चलता रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोग की आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, तो माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा। ओके, धन्यवाद दादा। नमस्कार। नमस्कार। दादा ने प्राउड में सोशल सिक्योरिटी की बात की कि अगर लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी होगी तो शायद ये समस्याएं कम, बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुछ परसेंट तो जो साइकिक प्रॉब्लम्स है वो लोगों को रह ही सकते हैं। अब मैं राजेंद्र दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बीच काफी लेट से जुड़े हैं, लेकिन प्लीज 2 शब्द हम लोगों के बीच में रखें। राजेंद्र दादा, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ अस। या दीदी, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, हम काफी लेट हो गए, इसलिए कि आई वाज असिस्टिंग समवेयर समवन, दैट्स व्हाई आई केम लेट। आई एम सॉरी। तो आई डोंट नो व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड, बट आई एम रियली हमारे अनुसार जो बहुत बेसिक जो फ्रेमवर्क है जो दादा ने बोला, प्रभुत्व का 5 फंडामेंटल्स की गारंटी जो है, टुमारो इज नॉट सर्टेन और सिक्योर यू कैन से, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है समाज में, कम से कम भारतीय समाज में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं एक लाइन का एक इंटरव्यू बताऊंगा। एक बच्चे ने मेरे को फोन किया था, मार्गी है कहीं से, वो बोल रहा था कि दादा हम लोग एक जमाने में लोग कहा करते थे कि शादी कर लो, तो लोग बोलते थे अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तब ना शादी करूंगा करके बात। अब या मतलब कमाओगे नहीं तो खिलाओगे कैसे, ये जो एक स्टेटमेंट है, पैटर्नल सोसाइटी का स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट इज देयर। और आज वो बोलता है कि खुद की स्थिति ऐसी है कि हम खुद को कैसे जिंदा रखें, तो और चीजें तो एकदम सेकेंडरी है, मतलब पीपल आर नॉट इवन एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो ये जो दादा ने बताया, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड दैट टू शुड बी गारंटीड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट पीपल आर सेफ, सिक्योर, एटलीस्ट फॉर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कम से कम एग्जिस्टेंस तो गारंटी रहे, देन पीपल कैन थिंक ऑफ। दूसरा पॉइंट दीदी मैं बोलना चाह रहा था, उस दिन दादा बहुत अच्छा बोले, जो हम लोगों का नया एजुकेशन पॉलिसी है, हरानंद दादाजी जुड़े थे, जो बच्चों में जो लैक है, हम लोग ये भी बात किए थे कि स्पोर्ट्स वगैरह का इश्यू है, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन का जो इश्यू है, सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो चीजें जो हम लोगों के अच्छे अच्छे वर्ड सेंटेंसेस ले आकर के एजुकेशन सिस्टम में रख तो दिया गया है, बट ये कुछ उसी तरह का है जैसे कि हमारे यहाँ लॉस तो बहुत हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सो दैट इज द सिचुएशन आई एम एक्सपेक्टिंग इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि जब तक मनुष्य अच्छा नहीं होगा सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा दीदी, आज मैं जो बोलना चाह रहा था कि आई डोंट नो वेदर दिस हैज बीन डिस्कस्ड, द बायोसाइकोलॉजिकल इश्यू। आज समाज में साइंटिफिकली हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, जो हम लोग बात करते हैं हैप्पी हार्मोन्स की, ये बहुत आजकल फेमस है, और बेसिकली ये सेरोटोनिन इज द मेन, जो कि पिनियल ग्लैंड से संबंधित है, एंड इसी को हम बेसिकली हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। फिर डोपामिन है, तो उसके डिफरेंट रीजंस हैं, विच जो कि एसोसिएट होता है प्लेजर किसी अवार्ड से, जैसे किसी को अप्रिसिएशन किया तो। इसी तरह से एंडोर्फिन्स है, ये जो हार्मोन्स हैं ये होते हैं पेन स्ट्रेस कम करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन भी है, तो ये लोगों का जो रोल है ये तो सबको पता है, और आज ये भी पता है कि इन हार्मोन्स को हम किस तरह से इंस्टिगेट कर सकते हैं, इनको एग्रीवेट कर सकते हैं। तो इनमें कुछ चीजें हैं दीदी, जो कि एक्सरसाइज जो हम सब जानते हैं, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, वही मैं बोल रहा था कि स्पोर्ट्स जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एंड जो कि बिल्कुल ही मिसिंग है। यहाँ तक मिसिंग है, मैं आपको बता दूं कि इवन जो टॉपर्स बच्चे हैं वो फ्यूचर में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां उनमें होती हैं, जो कि अभी हम लोग बात किए। एंड स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, हम में से कितने लोग हैं, अब आजकल तो वातावरण ऐसा है कि पता नहीं कितने लोग सनराइज देखते हैं अपने जीवन में और कितनी बार देखते हैं, और पता नहीं छत पे जाके कभी चांद को देखते भी हैं या नहीं। तो ये जो है स्पेंडिंग टाइम विद नेचर या घूमने जाना, इस तरह से सोशलाइजिंग है, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, ये सब जो है ऑक्सीटोसिन को जो है वो प्रमोट करता है सोशल बॉन्डिंग के लिए, फीलिंग्स ऑफ कनेक्शन,
एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद है, आपने एक प्रोग्राम कराया था जो हमारी क्या दीदी का नाम है, जो यूएस वाली हैं, उन्होंने बताया था द पर्पस इन लाइफ, दैट इज ताप्ती दयानंद। या दीदी, ये तापसी दीदी, यस। सो द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ इज मिसिंग। आपने ये भी बताया था, इसी से रिलेटेड, सुसाइड से रिलेटेड उन्होंने बताया था, एक बच्चा या आदमी सुसाइड करने वाला था, बट उसके फिर उसको लास्ट में समझ में आया कि हमारे कुत्ते को कौन देखेगा, एंड देन ही चेंज हिज डिसीजन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट हैज टू बी द पर्पस ऑफ लाइफ। और पर्पस ऑफ लाइफ में एक ऐसा पर्पस है जो बाबा कहते हैं कि हमारा हर आदमी का एक आधार होता है, कोई माँ बाप पे डिपेंडेंट है, कोई अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, कोई वाइफ पे डिपेंडेंट है, कोई भाई पे, डिपेंडेंसी रहता है किसी न किसी के ऊपर। तो बाबा कहते हैं कि ये सब ऐसी टेम्पोररी चीजें हैं, कोई धन के ऊपर है, जो कभी भी खिसक जाएंगी। तो क्यों ना हम आधारों के आधार परम पुरुष को अपना आधार बना लें, ताकि उस आधार उतना मजबूत आधार पकड़ें जिसके कभी खिसकने का या हटने का कोई संभावना ही नहीं रहता है। इस तरह से एक और चीज है मेडिटेशन, जो कि हम लोग करते हैं, इसको बहुत लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। इनसे भी पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंड दीज प्रैक्टिसेस हैव बीन शोन टू इंक्रीज डोपामिन लेवल एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन्स। तो ये जो चीजें हैं, मैं यही बोलना चाह रहा, दीज आर द बायोसाइकोलॉजिकल थिंग्स which can be created in your body and people will be, देखिए यदि आदमी खुश रहता है तो कभी सुसाइड नहीं करेगा, और इसका जो आधार है वो तो दादा ने बोल दिया, और जो आधार है कि वो रहते हुए भी लोग सुसाइड करते हैं, उनके लिए कम से कम ये चीजें हैं जो साइंटिफिक ढंग से इन हार्मोन्स को सीक्रेट करके नेचुरल ढंग से, नॉट बाय टेकिंग इंजेक्शंस। ईटिंग हेल्दी डाइट is also very important. I mean, consuming nutrients, dense food such as fruits, vegetables, whole grains. बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारे खाने का 50% से ज्यादा जो है वो अल्कलाइन फूड होना चाहिए, मतलब सब्जी, सलाद, ये सब होना चाहिए। एंड अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को अलग अलग तरह की म्यूजिक भले पसंद हो, बट म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए। लिसनिंग टू म्यूजिक हैज बीन शोन टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ डोपामिन। सो ये जो चीजें हैं दीदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक्सरसाइज के नाम पे मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट करती हैं। उनमें से सर्वांगासन है, एक ऑक्सीडेंटल आसन, इसको सेतुबंध आसन कहते हैं, भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, मत्स्य आसन है, विपरीत करणी एक मुद्रा है, वो लेग्स अप एंड वॉल पोज होता है, ये आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज जो है साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम इन चीजों का प्रचार करके, बहुत समाज में अवेयरनेस ला करके हम इस स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस और लोनलीनेस, यही दो रीजन है, चाहे किसी भी कारण से हो, कि मनुष्य या बच्चे भी सुसाइड करते हैं। सो दिस हियर आई एम एंडिंग माय स्टेटमेंट दीदी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dada. Now I'm going to wind up this session, and I'm especially thankful to Vijay Lakshmi Didi. She spared time for us, and she is new member, and she is non-margi and counselor, and I really appreciate her words. She stayed with us for 1.5 hours. We all are thankful to her, and her other members are ours, so no need special thanks. But yeah, you spared time for Thank you. Thank you, Poonam Didi. Thank you, Vijay Lakshmi Didi. मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन अन्य सभी हमारे अपने मेंबर्स हैं, इसलिए उन लोगों से मैं ज्यादा ऑब्लाइज विजय लक्ष्मी दीदी की हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने लिए समय, हम लोगों के लिए समय निकाला। और मैंने सुना है इनके सब सही में बहुत खूबसूरत थे। आप लोग भी अगर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो आप जरूर इनको सुनिएगा, यही मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इसको सुन नहीं पाए। शॉर्ट था लेकिन बहुत ही अच्छा था इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए और हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए। जब भी आप लोगों के पास हमारा ये लिंक जाए, रिक्वेस्ट जाए, सो प्लीज हर थर्सडे हमारा GPIF का ओपन फोरम होता है और हर सैटरडे UPIF का होता है। हम लोग हमेशा नए टॉपिक के साथ आते हैं। अगली बार फिर कोई नया टॉपिक, नया प्रॉब्लम और उसका नया सॉल्यूशन हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे अपने इस इंटेलेक्चुअल फेडरेशन में। सो प्लीज आप लोग जब भी आपके पास लिंक जाए, यू ऑल प्लीज ट्राई टू join and spare your time. Thank you so much. Good night, everyone. Thank you, Poonam ji. Thank you. Regarding suicides, I have collected some quotations of Baba. I'll put in UPIF. If you feel like, you can share further. Thank you. Okay.